Hello, my dear friends. I am your SSB expert, Colonel Sanjeet Sirohi. Today, I have come with a very important topic, and that is general awareness must for SSB. Now, you can call it general awareness, you can call it general knowledge, but it is a must for SSB. अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक तरह का भूत, एक तरह का घोस्ट है जो आपको रिटन एग्जाम में भी याद करना पड़ रहा है, और अभी रिटन एग्जाम दिया है, पास हो गए, अब इसको एसएसबी में भी जरूरी बता रहे हैं सर. वेल, लेट मी टेल यू, इट इज इम्पॉर्टेंट, एंड व्हाई इम्पॉर्टेंट आई लेट यू नो. नाउ what happens is, question which must come to your mind is, what is the syllabus of this general awareness or general knowledge? Now it is very, very wide and it is very narrow. Yes, what I am saying is it is wide as well as narrow. Wide because it covers everything. It covers current affairs, it covers your personality, related to your personality, it covers your subjects which you have in your 12th or in your graduation. It requires your knowledge about the profession of your parents, and if you are doing a job, then it requires a knowledge about your job. So it is very, very wide, and it is narrow also, because if you focus on yourself, on your surroundings, on your neighborhood, then it becomes very narrow. So now the question comes is, how do I prepare for this general knowledge? Now let me tell you, the simple thing is that you have to start preparing from the day one and make it a habit. This general awareness should be a habit in you, that curiosity होनी चाहिए आपके अंदर, अपने बारे में जानने की, अपने आस पड़ोस के बारे में जानने की, अपने शहर के बारे में जानने की, अपनी स्टेट और अपने देश और जो इंटरनेशनली हो रहा है उसके बारे में जानने की. सो कैन यू नाउ master this subject? No, nobody can master this subject, but yes, what you can do is you can try to know as much as possible. Now suppose a teacher comes to you, if you are in college, a professor comes and gives you a surprise test. How many of you think that you will pass? Well, let me tell you, वो ही पास होंगे जो रोजाना अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं. बट इफ यू आर द वन हु प्लान्स कि मैं एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले पढ़ूंगा, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू पास इन योर सरप्राइज टेस्ट. द सेम थिंग इज विद योर जनरल अवेयरनेस फॉर योर एसएसबी. द अदर थिंग, व्हाई दिस थिंग जनरल अवेयरनेस इज important, because when you interact with your GTO during your group discussion, during your lecturate, and with your interviewing officer in personal interview, if you are good in general awareness, they will assume, वो ये सोचेंगे कि आप बाकी चीज़ों में भी अच्छे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जिनकी जनरल अवेयरनेस अच्छी होती है उनके बाकी काम भी अच्छे होते हैं. So that is the reason you must prepare for your SSB by having a general awareness, general knowledge regarding everything, especially about you, about your personality, about your town, about your state. Now, how do I go about? मैं कैसे करूँ ये सब तैयारी? First and the foremost, मैं हमेशा बोलता हूँ day one को कि please inculcate a habit of reading newspaper. Now, newspaper में क्या पढ़ना है? Firstly, read all news which affect large success of people regionally, nationally and internationally. That means वो न्यूज़ आप जरूर पढ़ें जो कि सबको जिसके ऊपर असर होता है. अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो देन यू मस्ट नो अबाउट दिस वॉर एंड इफेक्ट्स ऑफ दिस वॉर इंटरनेशनली, नेशनली एंड इन फॉर योर स्टेट. Then number 2, read thoroughly news relating to your area of interest or your hobbies. Very, very important. Especially when you go for an interview, और जब आपसे आपके हॉबीज़ के बारे में पूछा जाएगा या आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, और आप कहते हो कि मेरी हॉबी है फुटबॉल खेलना, then you must know everything about football. If your hobby is listening to music, then you must know everything about your music. What is the latest
about your music. So when you read newspaper, you must try to find out कि आपके इंटरेस्ट की या आपकी हॉबीज की क्या चीजें, प्लीज रीड दैट. Number 3, read all developments that pertain to your academic specialization and your current job. आपके पास जो सब्जेक्ट है और अगर आप नौकरी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी चीज अगर अखबार में आती है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, बिकॉज आई कैन एश्योर you will be asked question during your personal interview on these aspects. Then you must read everything which is related to your parents' profession. If a father is a businessman, then you must know something about the business in that special area. If your father is a doctor, then you must know what is the latest going on about the medicines, what are the latest invention. If your father is an engineer, then similarly you must know about the engineering aspect, the latest thing which is happening in that profession. Then you must browse through the news related to your town or city or your state. If there is anything happening in your town which is of importance nationally or internationally, if there is a final match going on as far as this games is concerned, that you must be fully aware of that. Next is that browse through the complete newspaper. कई लोग क्या होते हैं, वो सिर्फ ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स के बारे में, स्पेशली बॉयज आई हैव सीन, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट्स सेक्शन और इन द एंटरटेनमेंट सेक्शन. You must browse through the complete newspaper which gives talks about internationally what is happening, in business what is happening, in sports what is happening, nationally what is happening, politically, socially, economically, technologically, anything what is happening, you must be aware of that. Next is you must read newspaper and magazines, especially those magazines which are related to the current affairs regularly. कई कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो एसएसबी से हफ्ता 10 दिन पहले पढ़ते हैं, ना उससे पहले पढ़ते हैं ना उससे पढ़ते हैं, उसको कोई फायदा नहीं. लेट मी टेल यू, यू मस्ट मेक इट ए हैबिट. You must make a habit of genuinely interested in reading, especially reading newspaper. And let me tell you one more thing. Reading newspaper is important, but reading English newspaper is very important. So read national newspapers. Don't read local newspaper, because local newspaper generally give the news of the local area. Then you must find reasons to read and not excuses to not to read. This is very very important. Then once you read, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना है. जब भी कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, you must inculcate a habit of reflecting. रिफ्लेक्टिंग का मतलब है, अखबार में आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद अखबार को बंद करो, आंखें बंद करो और ध्यान करो, सोचने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा. यू विल रियलाइज कि शुरू में जब आप करोगे तो अगर आपने 10 पॉइंट पढ़े तो हो सकता है आपको 2 या 4 पॉइंट याद रहे. बट इफ यू हैव दिस हैबिट ऑफ रिफ्लेक्टिंग, तो आप धीरे धीरे अगर इसको अपनी हैबिट बना लेंगे तो यू विल रियलाइज कि आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू रिमेंबर 80 to 90% ऑफ व्हाट यू हैव रेड. तो ये जरूर करना है. नेक्स्ट पॉइंट न्यूज़पेपर से ताल्लुक. हर न्यूज़पेपर में सेंटर में एक एडिटोरियल पेज होता है. उस एडिटोरियल में 3 से 4 आर्टिकल्स होते हैं जो एडिटर लिखते हैं ऑन करंट अफेयर्स और ऑन जनरल व्हाट इज हैपनिंग. यू मस्ट रीड दोज. अगर कुछ भी इतना टाइम नहीं है और कुछ नहीं पढ़ सकते तो प्लीज रीड दैट वन पेपर प्रॉपरली. और जब उसको पढ़ते हैं उसमें जो करंट टॉपिक्स हैं, जो जनरल नॉलेज के हैं, जनरल अवेयरनेस के, नेशनल और इंटरनेशनल, एक नोटबुक लें, उसके अंदर से जो आपने पढ़ा है रिफ्लेक्ट करते हुए उन पॉइंट्स को नोट करें. ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? बिकॉज वंस यू गो टू फॉर एसएसबी, सबसे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन होगा.
ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक दिए जाते हैं वो ज़्यादातर टॉपिक जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है और आपने एडिटोरियल पेज पढ़े हैं तो आप जो है ग्रुप डिस्कशन में यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट very interestingly by giving out good and solid points. Number 2, lecturate. lecturate में आपको 4 टॉपिक्स मिलेंगे, 4 में से आपने एक सेलेक्ट करना है और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि उन 4 में से 1 या 2 टॉपिक ऐसे होंगे जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो अगर आपने ये जनरल अवेयरनेस अभी से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो लेक्चरेट में आपको 3 मिनट बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड यू विल बी एबल टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट्स। तीसरा, पर्सनल इंटरव्यू। जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनल इंटरव्यू में आपको डायरेक्ट करंट अफेयर्स ना पूछ के आपको इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे अभी G20 समिट हो रहा है, कि आपको क्या लगता है कि G20 समिट में इंडिया ने क्या हासिल किया और हाउ इंडिया हैज इम्पैक्टेड इंटरनेशनली बाय बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ द G20 फोरम। सो ऐसे क्वेश्चन आपसे ओपिनियन के पूछे जा सकते हैं। सो इन द एंड आई वांट टू टेल यू दैट यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर जनरल अवेयरनेस, इफ नॉट today, at least by tomorrow you must start. If you don't read newspaper, please get newspaper, national newspaper, English newspaper. While doing that, ऐसा करने से आपकी जनरल अवेयरनेस भी बढ़ेगी और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। सो ये जो मैंने आपको बताया है जनरल अवेयरनेस का, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, this is one aspect which will help you to crack your SSB, to get recommended in SSB. Thank you. Jai Hind.